Hi everyone, this is Gul Lingua. We are back with another topic after a long time, that is preposition. Before going into the details of the prepositions, I would like to introduce what are the prepositions and what the basic terminology preposition is consisting of and what it means at the most basic level. So if we talk about the word preposition, it's consisting of the two parts. One is pre and other is position. Pre means before, as the word we are fully aware about it. Pre means before, and position, of course, it's referring to the location of something. Like the word preposition is giving us an idea that something is coming before something else. So preposition is something which always comes first and which is always in front of something and before something. Now let's discuss the definition of the prepositions. So prepositions are actually the words that show the relationship between the noun and pronoun and other part of the sentences. So prepositions जो हैं वो basic level पे from the very beginning we are taught कि prepositions जो हैं वो हमें relationship show करते हैं between the nouns and pronouns and other part of the sentence. बट इस डेफिनेशन को हमने बचपन से लेकर सुना है, लेकिन आज हम इसकी थोड़ी सी जस्टिफाई भी इसको कर लेते हैं कि कैसे वर्ड्स का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन होता है, प्रनाउन और नाउन का रिलेशनशिप कैसे दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ मेंटेन होता है विद द हेल्प ऑफ द प्रीपोजिशन. सो लेट्स कंसीडर एग्जांपल. आई एम इन द क्लास. I am in the class. For example, here the preposition is utilized I. I am in the class. Just eliminate the preposition I, preposition in from this sentence. So let's analyze, is there any relationship? क्या वहाँ पर कोई relationship बच रहा है sentence में या नहीं बच रहा? I dash the class. I don't think so. There is any relationship between the two parts of the sentence. So, in order to maintain this particular relationship, we are utilizing the preposition. Now, consider the very same sentence once again. I am in the class. I am in the class. Now it's giving us some sense, and there is the relationship between the pronoun I and the other part of the sentence, that is the class. I am in the class. Now it's giving us some good sense. Okay. Now after talking about the basic definition of the preposition, after its justification, consider some more points about the preposition. Prepositions are also utilized to indicate the location, direction, time, and manner of something. Now, you must be thinking how the prepositions are used to indicate the location of something. Consider an example that might help you to clarify your concept about it. Okay, uh, where, it would be answering to the word where. The book is on the table. Where is the book? The book is on the table. This is how it's showing the location. The book is on the table. Where is the book? The book is on the table. This is how the preposition is used to indicate location. Second, I told you that prepositions are used to indicate the directions. How do they do that? Okay, so this is how prepositions जो हैं वो लोकेशन को इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं. सॉरी, आई एम, consider an example. I'm going to the store. Where are you going? I'm going to the store. This is how it's indicating the direction. Now the third one I indicated, I told you about the time, that prepositions are used to indicate the time over here. Consider an example once again. We will meet you at 5 p.m. We will meet you at 5 p.m. When you would be meeting us, when you would be there, when you would be available. So, in order to indicate the time in this situation, the preposition at is utilized over here. Now, after that, I told you it is used to indicate the manner.
manners. So how it is used to indicate the manners? Consider an example. She sings. She sings with a beautiful voice. She sings with a beautiful voice. How she is singing? वो कैसे song गा रही है? किस manners में गा रही है? She sings in a beautiful voice. वो बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत खूबसूरत आवाज़ से सॉन्ग गा रही है. Now the fifth one is position. The position can be abstract or the physical. For example, the picture is above the fireplace. The picture is above the fireplace. Where is the picture? What's the position of the picture? What's the state of the picture? The picture is above the fireplace. Okay. After having the discussion about the and after discussing the introduction of the prepositions, let's talk about the preposition on. And now we would be discussing all the uses of relevant to the preposition on. Number one use of the preposition on is to show the surface of a thing. When something is on the surface, जब कोई चीज़ ऐसी हो जो कि सरफेस के ऊपर हो, तो उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए प्रेपोजिशन ऑन यूज़ होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल. वेयर इज़ द बुक? द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक को जो सरफेस रिक्वायर्ड है वो टेबल है, वो टेबल पे पड़ी हुई है. बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक इज़ नॉट इनसाइड द टेबल. बुक इज़ नॉट इनसाइड समथिंग एल्स. इट इज़ क्वाइट अपीरेंट टू अस बिकॉज इट्स ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग. बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक जो है वो सरफेस पे पड़ी हुई है, टेबल के सरफेस पे पड़ी हुई है. दैट्स वाई वी आर यूटिलाइजिंग ऑन preposition over here. Second example we can also consider over here, the marker. The marker is on the hand. The marker is on the hand. Where is the marker? What's the state of the marker and what's the surface? सरफेस कहाँ है मार्कर का? मार्कर का जो इस वक्त सरफेस है वो हैंड है. मार्कर जो है हमारी वो आँखों को अपीरेंट है, उसके वो किसी सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, एंड दैट सरफेस इज़ समवन्स हैंड. Marker is on the surface hand. That's why we are utilizing the on preposition over here, because on is used to indicate or show the surface of a thing, like the marker's state or the surface and of the pen also in the first example. Second use of the on is to show the days or dates. Now consider an example. He will come on Sunday. He will come on Sunday. ऑन जो है वो हमारे पास डेज़ और डेट्स को इंडिकेट करने के लिए, उनको शो करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए यूज़ होता है. अब यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि वो आएगा संडे पे. वो आएगा संडे पे, एतवार पे आएगा वो. ही विल कम ऑन संडे. यहाँ पर एक डे की एग्जांपल, हम डे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ऑन का. ऑन के प्रपोजिशन डेज़ के लिए और डेट्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होगा. नाउ द सेकंड एग्जांपल इज़ नेहा वॉज बोर्न ऑन 29th September 2003. व्हेन नेहा वॉज बोर्न, कब पैदा हुई थी, किस डेट पे पैदा हुई थी? वो पैदा हुई थी 29 सितंबर 2003. यहाँ पर एक डेट है, उसको इंडिकेट करने के लिए हमने ऑन का प्रीपोजिशन यूज़ किया है. दिस इज़ द सेकंड यूसेज ऑफ ऑन. नाउ just consider the third example of third usage of the preposition on, to show the usage of devices or machines. किसी मशीन के या डिवाइस के यूज़ हो रहा होगा, तब भी हमने ऑन का प्रीपोजिशन यूज़ करना है इस चीज़ को शो करने के लिए. नाउ कंसिडर एन एग्जांपल. अली इज़ ऑन द फ़ोन. अली इज़ ऑन द फ़ोन. अली जो है वो फ़ोन पे है. डजंट मीन कि वो फ़ोन के ऊपर खड़ा हुआ है. दैट इज़ नॉट द केस. अली जो है वो फ़ोन पे बात कर रहा है. आई कैन ऑल्सो रिप्लेस दिस वर्ड. I can also means consider this example in this way. Ali is on the call. अली जो है वो कॉल पे है. नाउ कंसिडर द सेकेंड एग्जाम्पल रेलिवेंट टू द वेरी सेम कॉन्टेक्स्ट. आई वॉज वॉचिंग मूवी ऑन द टीवी. मैं टीवी पे मूवी देख रही थी. आई वॉज वॉचिंग मूवी ऑन द टीवी.
अब यहाँ पर जो टीवी है दैट इज़ अ डिवाइस, लाइक पहले सेंटेंस में, पहली एग्जांपल में हमारे पास जो डिवाइस थी दैट वाज फोन, एंड नाउ अगेन वी आर हैविंग द एन अदर डिवाइस दैट इज़ टीवी। टीवी पे देख रही है, शी इज़ वॉचिंग movie on TV. She is watching cricket match on TV. She is watching cartoons on movie on TV. We can say that again we are utilizing on over here because हम किसी डिवाइस, किसी मशीन की बात कर रहे हैं. Then Hira is working on computer. Hira is working on computer. Again we are utilizing the preposition on over here, in the on over here, because हीरा जो है वो वर्क कर रही है किसी डिवाइस पे, किसी मशीन पे वो वर्क कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑन का यूज़ कर रहे हैं. Consider the third usage of the on preposition to indicate the body parts. To indicate the body parts, we would be utilizing the preposition on. जब भी हम body parts की बात करेंगे तब भी हम preposition on की ही on को का ही यूज़ करेंगे. अच्छा, consider the first example. My father slept on my cheek. My father slept on my cheek. Cheek is a body part, that is the body part. So that's why we are utilizing the preposition on over here. So after that, consider the second example. Alia wears crown on her head. आलिया जो है उसने क्राउन पहना हुआ है, कहाँ पर पहना हुआ है? ऑन हर हेड. हेड इज ऑल्सो कंसिडर्ड as one of the body parts, so that's why we would be utilizing the preposition on over here in this context. Consider another example of in this context, that is of she wears diamond ring on her finger. You might be getting confused why I'm using on over here. I can also use in over here, but that would be considered wrong. Here again we are talking about one of the body parts, that is finger. So that's why we would be utilizing she wears diamond ring on her finger. On her finger, that is quite apparent to our eyes, that is on the surface of the finger, so that's why we are utilizing the word, the preposition on over here in this context. Consider another example for further clarification. The ice cream fell on my leg. आइसक्रीम जो है वो मेरी लेग पे गिर गई. आइसक्रीम जो है, again I'm talking about my body part, so that's why I'm utilizing the preposition on in this context also. Now mm, okay, fourth example we can also consider, as in order to clarify the context. My mother kissed on my forehead. Doesn't mean कि आपके father all the time he would be slapping. There can be another case also, like your mother can be kissing you on your forehead. My mother kissed me on my forehead. So here again I'm talking about my forehead, that is my body part. Of course I would be utilizing the preposition on in this context. Now the fifth and the last usage of the preposition on is to show the state of something. What is the state of something? At that time we would be utilizing, in order to indicate the preposition on, in order to indicate the state of something, we would be utilizing the preposition on. द प्रोडक्ट इज़ ऑन डिमांड. अब कोई प्रोडक्ट है वो डिमांड पे है, इन ऑर्डर टू इंडिकेट इट्स स्टेट, डिमांड जो है वो उसका स्टेट है, दैट्स वाई वी वुड बी यूटिलाइजिंग द प्रीपोजिशन ऑन. द प्रोजेक्ट इज़ ऑन ट्रैक. ट्रैक पे जा रहा है प्रोजेक्ट, दैट्स अगेन स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ समथिंग, सो वी वुड बी यूटिलाइजिंग द प्रीपोजिशन ऑन. द पेशेंट इज़ ऑन द मेंड. Patient is on the recovery mood or mode, so we would be utilizing preposition on over here because it's depicting its his or her state. ओके यहाँ पर कुछ रेलिवेंट एग्जांपल्स आप लोग कंसीडर कर लें जो कि इस कॉन्टेक्स्ट को शो कर रहे हैं, टू शो द स्टेट, दैट इज़ द लास्ट यूजेज ऑफ रेलिवेंट टू द preposition on. Babar Azam was on fire last night.
अब यहाँ पर जो क्रिकेटर हैं बाबर आजम, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उसका स्टेट क्या था लास्ट नाइट. ही वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट मीन्स ही वॉज परफॉर्मिंग इन अ वेरी गुड मैनर्स. उनकी फॉर्म अच्छी थी, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. दैट्स वाई ये जो कंडीशन है ये भी उनका स्टेट शो कर रही है, तो इसीलिए इस स्टेट में भी हम ऑन का यूज़ करेंगे. शी हैज़ बिन ऑन हर बेड रेस्ट. शी हैज़ बिन ऑन हर बेड रेस्ट from last 2 days. She has been on her bed rest from last 2 days. Again, it's depicting someone's state. So we would be utilizing the preposition on over here. And the last example we can consider is mango shake is on demand, or you can say not it's all the time the mango shake is on the demand. You can indicate your own favorite drink over here. That can be any kind of the juice or any kind of the shake also, like the banana shake is on the demand, the orange juice is on the demand. So this is how again it's indicating something shakes uh, states. So that's why we are utilizing the preposition on over here. Thank you. That's all from my side. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.